नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज एक ऐसे मसले के साथ आपके सामने हूँ जो हम महिलाओं से जुड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने हाल ही में कहा कि जुडिशरी में महिलाओं को 50% आरक्षण मिल जाना चाहिए। इसके अलावा देश भर के लॉ कॉलेजों में भी महिलाओं को इतना ही आरक्षण मिलना चाहिए। ये महिलाओं का अधिकार है, कोई चैरिटी नहीं है। इस टिप्पणी ने देश भर में एक बहस की शुरुआत की है। सवाल ये है कि क्या हमारे पास उतनी संख्या में और उतनी काबिल महिला उम्मीदवार हैं जो जज की कुर्सी पर बैठ सकें। 1950 से अब तक सुप्रीम कोर्ट की जब से स्थापना हुई उस वक्त से 1989 में जस्टिस फातिमा बीबी को देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त करने में लगभग 39 साल लगे। ऐसे हालात तब हैं जब भारत में 6 लाख से अधिक कानूनी कर्मियों के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी पेशा है। सुप्रीम कोर्ट को 1 अगस्त को 9 जो नए जज मिले। नए नियुक्तियों में 3 महिला न्यायाधीश भी थीं। इसके अलावा शीर्ष न्यायालय में अब तक की सबसे अधिक महिला न्यायाधीश हैं, यानी कि 33 में से 4, जो कि 12% है। वैसे उच्च न्यायालयों के 677 न्यायाधीशों में से केवल 81 महिलाएं हैं, जो 11.96% हैं। और इस वक्त यदि बात करें तो भारत के किसी भी उच्च अदालत में, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इस वक्त कोई महिला नहीं है। इस साल की शुरुआत में टाटा ट्रस्ट द्वारा लाई गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट लोअर जुडिशरी के न्यायाधीशों के स्तर पर 20 राज्यों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2 साल की अवधि में औसतन उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की हिस्सेदारी 11% से बढ़कर 13% हो गई है, जबकि अधीनस्थ न्यायालयों में 28% से बढ़कर 30% हुई है। आंकड़े ये दर्शाते हैं कि भले ही मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन देश की न्यायिक व्यवस्था में ग्लास सीलिंग अभी भी बरकरार है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर कॉलेजियम 2 जजों की नियुक्ति करता है तो जिला अदालतों में पर्याप्त योग्य जज ही नहीं मिल पाते हैं। उसे सुप्रीम कोर्ट बार से चुनना चाहिए, जहां बहुत अच्छी महिला वकील हैं। कम महिला जज होना एक वैश्विक या ग्लोबल स्थिति है। क्या इस मामले में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि अगर हम यूके और अमेरिका की भी बात करें तो वहां भी जुडिशरी में महिलाएं पुरुषों से कम संख्या में हैं। यूके में 32% कोर्ट में जो जज महिलाएं हैं और यूएस में 34% स्टेट जज महिलाएं हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बेंच में कुल 15 से 20% ही बेंच पर 3 महिलाएं हैं। अमेरिका में स्थिति भारत से भी ज़्यादा खराब मानी जा रही है। अमेरिकी जुडिशरी सिस्टम 232 साल पुराना है, लेकिन वहाँ अभी तक कुल 115 जज हुए हैं। इन 115 जजों में केवल 5 ही महिलाएं हुई हैं। मौजूदा 9 जजों में 3 महिला जज हैं। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में अब तक एक भी महिला जज नहीं बन सकी है। तो क्या ये समझा जाए कि पूरे विश्व में महिलाओं को लेकर एक तरह से ये जो एक ऐसा न्यायिक व्यवस्था का जो दरवाज़ा है वो अभी तक नहीं खुला, वो बंद है। दिसंबर में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि यौन हिंसा से जुड़े मामलों में अधिक संतुलित और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण के लिए अधिक महिला न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाना चाहिए। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि महिला जजों के फैसले क्या वाकई में पुरुष जजों से अलग होते हैं? क्या उनके फैसलों में एम्पैथी ज़्यादा होती है? लेकिन क्या न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% प्रतिनिधित्व का हक संविधान में संशोधन या फिर न्यायिक आदेश से हासिल हो सकता है, या फिर ये एक ऐसा ख्वाब है जैसे चांद को ज़मीन पर लाना हो? अगर संसद कानून पारित नहीं करता तो न्यायपालिका में महिलाओं के 50% आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को क्या न्यायिक आदेश पारित करना पड़ सकता है? इसी के अलावा एक बड़ा सवाल ये भी है कि यदि महिलाएं आ भी जाती हैं तो क्या हमारी व्यवस्था ऐसी है जो महिलाओं के लिए काम करने में आसानी हो सके? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार है? निचली या जिला अदालतों की यदि बात करें तो राज्य न्यायिक सेवाओं में 5% से 35% तक आरक्षण का नियम है। क्या इसे बदलना होगा? तभी निचले स्तर पर महिलाओं को न्यायपालिका में ज़्यादा एंट्री मिल पाएगी। ये सारे सवाल हैं, कुछ आंकड़े हैं। हम एक रिपोर्ट के जरिए इन तमाम सवालों को आपके सामने रखते हैं और साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सीजीआई रमन्ना की जो बात है वो महज एक हेडलाइन है और जिसको ज़मीन पर उतारना नामुमकिन है, या कुछ संभावनाएं भी हैं। पहले आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हमारे साथ एक बेहद ख़ास
पैनल जुड़ेगा और हम उनसे इस पूरे मामले को, ये जो सपना है जो आजकल पूरा देश देख रहा है, इसको कैसे हकीकत में बदला जाए, इस पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की पैरवी की है। उनका कहना है कि ये महिलाओं का हक है जो उन्हें मिलना चाहिए। न्यायपालिका के निचले स्तरों में 30% से कम न्यायाधीश महिलाएं, उच्च न्यायालयों में ये 11.5% है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये केवल 12% है। हजारों वर्षों के दमन बहुत, ये सही समय है न्यायपालिका में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व मिले। ये आपका अधिकार है, ये दान की बात नहीं। कार्ल मार्क्स ने अलग अलग समय में और एक अलग संदर्भ में कहा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास अपने चैन के अलावा खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इसे थोड़ा संशोधित करने की स्वतंत्रता ले रहा हूँ। दुनिया की महिलाएं वो एक, आपके पास अपनी चैन के अलावा खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आप सभी की मदद से हम शीर्ष अदालत और अन्य अदालतों में 50% प्रतिनिधित्व तक पहुँच सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ रहूँगा या फिर कहीं और, लेकिन उस दिन मुझे खुशी जरूर होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट पर बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रदीप राय ने कहा कि सीबीआई की टिप्पणी स्वागत योग्य है, लेकिन ये हकीकत में तब्दील होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट में भी महिला जजों की नियुक्ति की जानी चाहिए। माननीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमन्ना का जो बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया है कि वो इसके लिए मांग उठाएं, इसके लिए आवाज बुलंद करें, लड़ें इसके लिए। मेरा ये कहना है कि ये बहुत ही अच्छा और व्यवहारिक कदम है, क्योंकि एक आधी आबादी को एक तरह से न्याय मिलेगा इससे। और मैं ये भी अनुरोध करूंगा माननीय मुख्य न्यायाधीश से कि अगर हम इस तरह की बात कर रहे हैं तो इसको धरातल पे भी लाना चाहिए, और जो अभी नई भर्तियां होनी है, जो नए अपॉइंटमेंट्स होने हैं हाई कोर्ट के जजेज के, कम से कम उसमें ये दिखना चाहिए। आपने सुप्रीम कोर्ट में जरूर 4 महिला न्यायाधीशों को दिया है, लेकिन मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि हाई कोर्ट्स के अंदर भी उनकी बड़ी संख्या होनी चाहिए। ये बहुत ही व्यापक, स्वाभाविक और स्वागत योग्य कदम है। अपने संबोधन के दौरान सीबीआई रमन्ना ने वकीलों और बार काउंसिल में भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व न होने की बात उठाई। उन्होंने कहा कि देश के 1.7 मिलियन एडवोकेट्स में से केवल 15% महिलाएं, स्टेट बार काउंसिल में केवल 2% निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएं, इंडिया नेशनल कमेटी के बार काउंसिल में एक भी महिला प्रतिनिधि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 4 महिला न्यायाधीश जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हेमा कोहली, बीवी नगरत्ना और वीला एम त्रिवेदी है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चीफ जस्टिस सहित 33 न्यायाधीश हैं और इस लिहाज से महिला न्यायाधीशों की संख्या लगभग 12% बन गई है। जस्टिस नगरत्ना की सितंबर 2027 में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो वो देश की पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत एक शेर के साथ करना चाहूँगी। एक मशहूर शेर है कि देखो रोशन हुआ जाता है रास्ता कि एक औरत आ रही है। उम्मीदें बहुत जग गई हैं जब ये कहा जा रहा है कि न्यायपालिका में 50% का आरक्षण होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद है। इस उम्मीद को कैसे धरातल पर उतारा जाए, इसके लिए बेहद खास पैनल में साथ जुड़ रहा है जस्टिस शिवराज पाटिल, पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जस्टिस सुजाता मनोहर, पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट की, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जस्टिस निर्मलजीत कौर, पूर्व जज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ शोभा गुप्ता जुड़ी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की। हमारे साथ इसके अलावा मीनाक्षी अरोड़ा फोन लाइन से जुड़ेंगी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की, और हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लुथरा भी जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आप सबों का मेरे इस पैनल पर। और I'll start with you, Justice Sujata Manohar. You have recently been awarded the Ginsburg Medal of Honor. Here is the opportunity to congratulate you. Justice Ruth has been advocating for women's participation in judiciary. Today, when CJI Ramanna talks about giving 50% reservation
to women in judiciary. How do you see this proposal in Indian context, madam? Well, I was reminded when I read this statement of what Justice Ruth Bader Ginsburg had said. You know, American Supreme Court has 9 judges. So she was asked, what according to you is the right number of women judges in the American Supreme Court? And she replied 9. So, you see, numbers are all right, but what we really want is a fair playing field. I think, you see, what you want is non-discrimination, allow capable women to function, and there should not be any adverse attitude towards women, like saying that, well, there should not be any harassment, sexual or otherwise, and there should be a fair playing field. Respect them for what they are. I think that is what we require. And if we have that basic attitude, which is quite opposite of patriarchal attitude, then the numbers will take care of themselves. I'm sure we can have more than 50% if capable women are allowed to function. Yes, yes, ma'am. Justice Patil, do you think that there is a policy change in Collegium now, that a series of decisions are being made and on appointment of judges, including women judges? So now Collegium is more towards to women? Before I answer it, I'd like to make 2 observations. Sir. One is for development of the country. We have got about 50 women in the country, and participate 50% women in all fields. There will be a contribution of their development of the country. Otherwise, we will be denied the contribution of 50% of the population to that extent in any other field, including judiciary. Sir. 2, if women can be president, prime minister, CEOs of multiple companies, doctors, Nobel laureates, etc., why not women judges can more in judiciary? In fact, on ground, undeniably, the representation for women participation is dismal or very, very insufficient. Now, answering your question, I think this is to answer your question. Collegium, whether there is in the Collegium follow. What I would like to see is the Collegium has envisaged judges came to Supreme Court. By Supreme Court, they are following principle and there is no policy having regard to large penalty in all courts, including the Supreme Court. The Supreme Collegium felt immediate and urgent need to fill up the vacancy. So Collegium has been more apt, and they are probably recommending for filling up the post at all levels. That is, there is change in the policy, but the Collegium has become more active these days. Sir, definitely sir. Justice निर्मलजीत कौर, अब जब 2 तरह के विचार हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन मैम जो टाटा ट्रस्ट की जब सर्वे की मैं बात कर रही थी, जिसमें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में जो साफ है कि लोअर जुडिशरी में लगभग 20 राज्यों में थोड़ा सुधार हुआ है, लगभग कुछ प्रतिशत का, लेकिन 11 से लेकर 13% की जो बात कही जा रही है, जिसको नॉमिनल माना जाए, लेकिन आपको ऐसा लगता है मैम कि अभी भी एक ग्लास सीलिंग सी है, एक ऐसी दीवार है जो महिलाएं तोड़कर नहीं निकल पा रही है? डू यू थिंक सो? Yes, you are quite near the truth, because what is happening is that that there is no really good infrastructure for women to get attracted to the profession. See, because at the lower level or otherwise, if you see the infrastructure, you will see almost in a large number of courts, there are some
there is not even a separate bathroom for women. Yes. Leave alone that, has been from time immemorial, it has been a male-dominated profession. And it has been discouraging women to come into this profession. Now, so that barrier, that glass barrier has to be broken to know that women do have a great opportunity to go to the highest posts. That they will, if at all, they will not retire at the subordinate level of the district level. They have a chance to go up to the High Court. They have a chance to go up to the Supreme Court. And that would definitely help a long way for the women to get attracted to this profession. This is a nice start by the CJI, who has actually taken up the cause that there should be 50% of women in this profession. But I think 50% is a far cry, because we don't even have 50% advocates. How will we at this stage have 50% judges in the judiciary? You see? So we have to attract women to first adopt law as the profession, get into this profession, then make the place so congenial and so comfortable for the women in this profession that they would be wanting to get into it. See, we have to attract the women at that stage. बिल्कुल। शोभा गुप्ता जी, ये जो पूरा ये हंगामा जो मचा है, जो अच्छे के लिए हंगामा मचा है, जो हंगामा बरपा है, 50% की जो भागीदारी की बात चल रही है, इसकी शुरुआत आपसे होती है जब आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। लेकिन जैसा कि जस्टिस निर्मलजीत कौर का भी सवाल है, जैसे सुजाता मनोहर ने भी बोला, जैसे शिवराज पाटिल ने भी कहा कि बिल्कुल मतलब खुले तौर पे स्वागत तो है महिलाओं का, लेकिन इसमें जाहिर सी बात है कि चैलेंजेस बहुत है, चुनौतियां बहुत हैं बार की तरफ से भी, यानी कि जो महिलाएं प्रैक्टिस कर रही हैं उनकी तरफ से भी। सबसे पहले तो मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ आपसे कि क्या ऐसी चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया इस तरह की याचिका डालने, क्योंकि आप लोग वो हैं जो जमीनी हकीकत से रोज रूबरू होती होंगी, खड़ी होती होंगी, तो सामने पुरुष जजों की एक पूरी फौज रहती होगी, लेकिन महिलाएं दिखती नहीं होंगी। So first of all, good evening to the honorable judges, especially Justice Sujata Manohar and Justice Patil. They are two saintly judges, and I had an occasion to appear before both of them. I was only 2 years old in profession, and Justice Sujata Manohar got retired, Justice Patil later. So such a pleasure seeing them. Justice Nirmaljeet Kaur, I never had an opportunity to personally, I don't know directly, but these two judges are very, very dear to us. Now, when it comes to the hard realities, honestly saying, I don't wish personally to talk about how, like, as a crybaby, like, what all we are suffering with. We, all women lawyers, are very, very lucky enough, because certainly we had the opportunity to study law, so that better. And those who have come to the courts and higher courts like Supreme Court or higher court, certainly we are far more like we had the advantage of working in the highest court of the highest court of the state. So no cribbing when it comes to opportunities as if, surrounding us. Ground reality to challenge that, to raise that challenge in Supreme Court filing that petition was, this is a hard reality which all three of the judges would agree with me, that whenever it comes to consider the women candidates or the candidates for the purpose of judiciary, if there are 20 names, they would be having 2 women lawyers' names, and then 18 would be the men lawyers. Yes. So to begin with, the fallacy where is, we are beginning. The beginning is wrong. Yes. I understand you pick maybe 10 women lawyers and 10 men lawyers, consider them and say, no, sorry, all 10 women lawyers are not good That's what Justice Nirmaljeet Kaur is saying. बिल्कुल। मीनाक्षी अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी अरोड़ा, आपसे भी यही जानना चाहूंगी कि जैसा कि सभी ने कहा कि शुरुआत तो होनी चाहिए, अगर शुरुआत की बात करें तो निचली अदालत तक हमें पहुंचना पड़ता है, और बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जो लोअर जुडिशरी में हैं, वहां तक भी उनकी भी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। वो कैसे रास्ता अपने लिए बनाएं ताकि वो इस बड़े तस्वीर में अपनी तस्वीर को देख पाएं?
I tell you, give me the whole. No, this is what she had said. And this is, it is time for the women. Our numbers are no longer very small. We have enough people out there to have proper representation on them. Yes. There are enough women who are competent, who are qualified, who can be selected irrespective of the representation on the bar. To really also to have people rising from the ranks, I'll tell you that representation unfortunately becomes very small, both women and men. Okay? And Yes. I think you need to have more representation of that. I mean, in the present lot, you have only Bela Trivedi who's come from the ranks. I definitely do feel that unless and until you don't encourage the lower judiciary and that they can be here too in the court, this court cannot be a place only for those who've had the advantage of coming directly from the bar and had the age on their side and etc. Yes. etc. Aspirations are there at all levels. जाहिर सी And बात है I जैसे definitely do जी feel that we don't have enough. And they bring a very special knowledge and experience. yes जैसे Sujata Manohar, now here is the question of law. If we talk about giving 50% reservation to women judiciary, then what is need to take legal initiative? If parliament does not enact a law, then what is the option of Supreme Court? Justice Sujata Manohar. No, there is no question of amending the constitution. In fact, I think it is against the interest of women to have any reservation. They will do much better without the reservations. What I want to say is that give them opportunities, give them a level playing field, allow women to function without any bias or prejudice. And you will get your numbers that you want. There is no need for reservation according to me. And I think it is much better that women show in their own against men. Sir. And I don't think we have any shortage of capable women in this country. Yes, We ma'am. have to allow them to work. Ma'am. Yes, Justice Patil, if we are not going for reservation, as Justice Sujata Manohar said, there is no need of reservation or there is no need of changing in constitution. But if you are not going for reservation, then how it is possible to give ladies the proper representation in the whole judicial system? The level field is not available till now. Reservation issue is a complicated and difficult issue. Sir. On the reality is, reservation in parliament for 1/3 has been hanging for more than a decade or two now. If you think of reservation in judiciary, for that matter, so many other issues do arise. Sir. Minorities, scheduled caste, scheduled tribes, OBC, in this process, time will go. But the urgent need is how best. I am for one. Sir. There must be adequate representation for women in judiciary, undeniably. But not necessarily that it should be done only through reservation. So long there is a merit, so long the women candidates are available to fill in the position, certainly conscious decision has to be taken in the judiciary and particularly by the Collegium of Supreme Court and High Courts. They must keep in view that there is a need for giving more and more representation to women. Take, for example, in the Constitution of India, there is no reservation for the different states. That from each state there must be 2 or 3 judges in the Supreme Court, etc. There is no such constitutional position. Yet, by and large, as a matter of convention, they have been following a policy of having at least all states must be represented. Similarly, a view can be taken that in all higher judiciary there must be proper representation to women. If this is a mindset is changed, conscious decision is taken, it can be achieved in course of time. But if we go enter into the arena of reservation, etc., it requires a constitutional amendment. So many other issues will arise, and again decades will pass. I am for one. There is a change for mindset. There is a change for the policy by the collegiums of the High Court and Supreme Court to give more representation to men consciously. And a good beginning has been made. Now we have 4 judges in the Supreme Court. I already mentioned. Now things are moving fast.
And it's also a matter of record that gradually position is improving. There is need for aggressive approach now to induct more and more women judges without going into the complication of reservation. Sir, Justice Nirmaljeet Kaur, if we are not going for reservation, मैम, तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम देखें गोवा और मेघालय के मैं आंकड़े देख रही थी, वहाँ विदाउट रिजर्वेशन लगभग 65 to 73% जो महिलाएं हैं वो जुडिशरी में हैं। अब लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर अभी भी देश में महिलाओं की जो लिटरेसी दर है वो बहुत कम है, अगर हमने रिजर्वेशन उनको नहीं दिया, शुरुआती दौर में उनको थोड़ा बढ़ावा नहीं दिया, तो आगे आने वाले समय में ये जो आंकड़ा हम 50-50 का सोच रहे हैं, ये शायद हमारे लिए चांद तोड़कर लाने वाला सपना बन जाए, हम कभी भी इस सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। डू यू थिंक सो? एब्सोल्युटली, वो तो शुरुआत ही उससे करनी चाहिए फ्रॉम दी जुडिशरी, लोअर जुडिशरी लेवल, एंड उस लेवल पे वी शुड इनकरेज। पर लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं दैट एट दैट लेवल लॉट ऑफ गर्ल्स, बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर लॉ you can sit for the exam. So at that level, now the percentage is increasing, actually increasing. And I mean, I have an example of Rajasthan. Actually, in the road, that sometimes the percentage of women who have cleared the exam is more than the boys, which is very, very encouraging at that level. But those judicial officers who are selected today, for them to come up to Supreme Court, it will take time. Yes. And in High Court and in Supreme Court, you have a separate quota for direct recruitment, directly taking judges in the High Court and directly taking in Supreme Court, or from High Court to Supreme Court also. So that should be encouraged. And let me tell you, I think there is a mindset, there is a blockage where when it comes to picking up women for appointment, the collegium, by and large, at the High Court level, they have little reservations in picking up, which is sad, and that must break. Yes. And this, I feel, with the CBI coming forward and saying so, openly telling women to take up cudgels and raise their voice and ask demands, is I think will make everybody sit up now and do it. I think the Supreme Court, the government, they can make it compulsory that we are not going to clear a list till there is at least some representation of a woman in that. Yes. You know, we are aware, we all know, we know the selection, and they do it. That's when we should have, you know, we should have diversification of while selecting. जी बिल्कुल बिल्कुल। Justice Sujata Manohar, do you think that if we have more women in collegium, then like, you know, for women it will be more convenient to come to the bench? If there are more women, will help. But I will tell you one thing. I don't know if you realize that this year is the 100th year of the women joining the legal profession. In 1921, Cornelius Surabji was the first woman who was allowed by the Allahabad High Court not to practice, but only to advise Pardanasheen women outside the courtroom. Now we have come to, for the first 50 years, with only one woman High Court judge, Anna Chandi. Now, in the next 50 years, we have had almost 75, 77 women High Court judges. So, you see, things are progressing and are progressing fast. I think we should not be satisfied with any kind of tokenism or having one woman or 5 women or something like that. We want proper representation on merit, and I am sure that if there are more women, as more women come into the bench, as more women come into the collegium, it will be easier for women to be recognized. Certainly that will help. Sir, Justice Shiraj Patel, it's just a curiosity, not Justice Shiraj Patel, yes, sir. I would like to add, sir, on the same system, you have given the statistics. In High Court of Madras, there are 13 women judges. Yes. In Bombay, there are more women judges. In some High Courts, there are less. System is same. Provisions are same. It all depends upon two factors. One, the collegium of the concerned, or for that matter, Supreme Court, they must have this
always in their mind alive to the situation that there is a need for representation of women. The second thing is they must be suitable candidates at the relevant point of. There may be 13 competent judges in Madras High Court. Even though in other high courts they would like to get them, maybe they are not getting the eligible candidates. Sir. What I say, in judiciary, we cannot sacrifice the merit. Integrity cum merit is the main and a very important issue. If we get sufficient number of women judges and all things being equal, they can be certainly preferred. There is no difficulty. One more fact to have to remember is women lawyers, strength of women lawyers was very less in the beginning. Sir. Even when I was in the High Court, hardly 5 or 6 women judges, lawyers were there. Today, we have hundreds of women lawyers in all High Courts. Sir. That means earlier they were not available. They had to wait for 10 years or whatever is the required period for coming to higher judiciary. Now the time has come, large number of women lawyers are there, eligible candidates are there. Obviously, they will be able to get their preference in higher judiciary. In High Court or Supreme Court, without reservation also this can happen. Sir. When we get the candidates, more number of competent lawyers among women are available. If the College of Minds, they can certainly get them without waiting for reservation. That's my view. हमारे साथ इस वक्त बेहद खास पैनल जुड़ा हुआ है। जस्टिस शिवराज पाटिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट के। जस्टिस सुजाता मनोहर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट की। और जस्टिस निर्मलजीत कौर भी हमारे साथ जुड़ी हैं, पूर्व जज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की। जस्टिस निर्मलजीत कौर, आई विल कम टू यू। सबसे बड़ी बात ये हो रही है मैम कि हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए। अगर हम किसी भी तरीके से हम जो एक मेरिट है उसे समझौता नहीं कर सकते और उसके लिए एक अच्छे ऑप्शंस की ज़रूरत है। अब अगर ऑप्शन की बात आती है तो एजुकेशन की बात आ जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां आएँ पढ़ें इसमें। अब लड़कियां जब पढ़ने आती हैं जुडिशरी में तो ये भी एक लीगल फील्ड में, माफ़ कीजिएगा, तो ये भी एक सच है कि वो ज़्यादातर कॉरपोरेट लॉ फर्म्स में जाना पसंद करती हैं, न कि जुडिशरी में आना पसंद करती हैं। आपको लगता है कि एक तरफ से लड़कियों की तरफ से भी एक रिजर्वेशन है, वो आना ही नहीं चाहती हैं इस बेंच तक आने से, ज़्यादा अच्छा उनको लगता है कि बार में रहा जाए? मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ, इन माय बिगिनिंग आई सेड इट that we will have to attract women to join this profession in the law fraternity and legal fraternity, or especially into judiciary. And that can only be done if we give them the proper infrastructure, congenial atmosphere for all that, and then know that they will be able to go to the highest level and they will not retire at the subordinate judiciary itself. We have to attract women to come more and more into the profession. But ma'am, having said that, let me tell you that the number of women which are already stepping into this profession, once they step in, they are very determined. So those who come in may be few, but that few is the cream who are the determined ones who are there to make it their bread and butter, their profession, and they are dedicated to it. So therefore to pick a woman from the bar becomes easier. They shine better. They come out better. They are more. You can notice them more. So they can be picked up. It is the mindset where we, who are in the selection committee, who are the collegium, who will have to do it. And they are the ones who will have to actually take this dream forward of the CBI. Sir. That please give more and more women. Ji. And I hope that this flow that has started by taking 3 women does not stop with the going away of the present CBI. And the next CBIs also continue to pick it up. It should not go away with him, and to make it a dream come true, I hope the next one also encourages it. And let me tell you, if the CBI makes it up his mind and tells all high courts that make sure that you send the names of women, they will jolly well do it. We know it, and they will do it. And when a CBI, when the collegium of a high court selects or picks up names, it would be nice that to consult the other women judges of that high court, not restricted within the first 3.
you know, so that they can suggest the names of the women from the bar जी to be taken up. जी बिल्कुल। लेकिन शोभा गुप्ता, जब एक वकील के तौर पर कोई भी चाहे वो शिवराज पाटिल, जैसे शिवराज पाटिल, यू वांट टू मेक अ पॉइंट सर? I want to add, in the context, I would like to add. Sir. There was a question with regard to the woman being in collegium. On that question, I would like to add connected with this also. Sir, bilkul. You know, under the judges' case, the collegium, the members of the collegium will be purely on seniority. When the earlier women judges were not there, question of coming into collegium did not arise. So long the judgment stand, they have to go by seniority. Now they have made a beginning. Number of judges have come. 4 judges in the Supreme Court have come. One is going to be Chief Justice of India. If all things go well, one is going to be Chief Justice of India. What about collegium? Yeah. If in their seniority, they will automatically come in collegium. Once their strength increases in High Court and Supreme Court, they will get in the collegium. The question is always the consideration will be merit, etc. in the collegium. Whether a member of the collegium is woman or men, ultimately they will decide on merit. So now they have made a beginning. They will come in collegium. They will become Chief Justices of High Court and Supreme Court also. But as long as the present system stands, there is no question of inducting somebody, a junior member. The woman judge can't be in the collegium because the judgments are there on the record. That's the point I wanted. But they may get. Sir, but that's the problem, sir, because how one woman can can go till that till that miles, how can she make it? That is the problem. जस्टिस शोभा गुप्ता वकील हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शोभा गुप्ता, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठ जा रहा है कि जब भी कोई महिला शुरू करती है अपनी प्रैक्टिस से, कोई भी वकील शुरू करता है, तो बहुत मामले में ऐसे होते हैं कि वो किसी न किसी सीनियर पुरुष के नीचे शुरू करता है, किसी बड़े वकील के नीचे शुरू करती है। अब वो एक तो उस पर दबाव रहता है कि उसको अपने जो सीनियर हैं और वो भी पुरुष है, और अपने जो कुलीग्स हैं वो भी पुरुष हैं, उनमें से उसको अच्छे से साबित करना है, अपने आप को, अपने काम को दिखाना है, और दिखाने के बाद ही उसका नाम वहां तक पहुंच पाएगा जब कॉलेजियम में जाएगा या उस पर किसी की नजर पड़ेगी। आपको ऐसा लगता है कि एक आम महिला के तौर पे जो जिंदगी होती है उसमें वो इतना लंबा सफर तय करने की स्थिति में नहीं होती है? नहीं, honestly saying, देखो, अगर lawyer, and let us also make a mark like men do. They also have several ifs and buts in their life. It's not as if life is bed of roses for them. So let's not consider that there are some exceptional thing being in a profession and then, trying to ask for some kind of bounties in their favor. We do not want a discrimination in a negative way, so we do not want a discrimination either way. Issue is this only, that consider at least, just Sujata Manohar said, that consider them at least. Our problem is that if you are considering 20 candidates, you would be having only 2 women to be considered, and rest 18 would be male. Once this conscious effort of not considering the stage, which is now being seen as if people are now making effort, she just is saying other judges are, the things now. If this considering them amongst, not just as a representation, okay, let's have one woman. In Supreme Court, out of 36, let's in another place, maybe in any kind of committee, one woman as a representation. At least आपको ले लिया है हमने. Not that way. That way, amongst how this cannot be a fabric in the last 70 years in the country. We did not have sufficient good women lawyers to have good number of women judges so far in the country. It must be lacking in consideration. Yes. I refuse to believe that you would not be having, or not as if, I'm sorry to say, not as every single judge is a brilliant lawyer. Yes. Justice Sujata Manohar, yes, here's the question. Justice Sujata Manohar, here's a question for you. If we can't just say there is no good women lawyer, that's why they are not in judiciary, they are not in high courts. What is the way forward? How one good lawyer
should come in the legal system and then she can join the judiciary. What is the way forward, ma'am? The way forward is already taking place. See, because the old days are gone when women were totally considered incompetent, not suitable for the profession. They were discriminated against. They were even harassed. Now those days are they have slowly disappeared, but by now things are much better. And in fact, I see in arbitrations appear before me very competent young women who are arguing their cases very well. So you have now the atmosphere where competent young women can perform and show their abilities and win cases. So now the next step, I think, should come very quickly. Because once you have this network of competent women who are doing well in the courts and for everybody to see, it gives a tremendous encouragement to other young women to join the profession and hope that if they are competent, they will do well. So I think we have already reached a stage where it's a takeoff stage, where in my view, it is now possible for competent young women to do well. Yes. So I'm very hopeful that soon we will have a complete transformation in the profession. I very much believe that, seeing the kind of young women who appear before me and how they argue now as against what was happening 50 years ago when I joined the profession. So I think we are at a stage where there's no need to despair about anything. I think we have reached a stage where women will do well if they studied their cases, if they're good at their work, they will do well. Yes, ma'am, but another question is about infrastructure. You know, lots of critics used to say that our infrastructure, especially the judicial infrastructure, is not ready, or courts are not ready. The courts infrastructure is not friendly to women or ready for the women. We don't have basic infrastructure for the women. Do you think that is also a negative point for the women lawyers to go to the bench rather not going to corporate law firms? No, of course, basic infrastructure has to be there, and I'm told that in many courts, especially in the remoter areas, there are no basic facilities for women. I think this has obviously to be corrected, and I think it is. If the Chief Justice of the High Court, who is in charge of all the courts in his state, looks into the matter, I am sure this can be corrected. So I don't think that is such an insurmountable problem. बिल्कुल. जस्टिस निर्मलजीत कौर, एक और सवाल, जब से झारखंड में धनबाद हाई कोर्ट में एक जज को गोली मारी गई, इसके पहले भी तमाम दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती रही थीं, तब से भी एक सवाल उठने लगा है कि एक महिला जज, कल्पना कीजिए कोई एक महिला जज हो, छोटे जो लोअर जुडिशरी है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जजेज के सिक्योरिटी को लेके और सुप्रीम कोर्ट तक के जजेज की सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी चिंताएं अब बढ़ गई हैं। और अगर छोटी जगह पे एक महिला जज है और सिक्योरिटी कुछ नहीं होती है, ऐसे में एक बड़ी चुनौती हो जाती है। एक तो महिला, उसके बाद वो जुडिशरी में है, फैसले दे रही है, और इस तरह के माहौल में आपको लगता है कि ये भी असर हो सकता है उन ब्राइट एडवोकेट्स के ऊपर जो ये सोचें कि नहीं, हम अपनी अच्छी खासी लाइफ छोड़कर इस तरह के जॉब में क्यों जाएं? नहीं, अगर किसी ने लेडीज ने अगर वकालत को, लॉ को चुना है प्रोफेशन, शी इज ऑलरेडी इन दैट. अगर हम डिस्ट्रिक्ट में है तो वो शी इज ऑलरेडी इन दैट एटमॉस्फियर. शी इज रबिंग शोल्डर्स equal to another lawyer, a male lawyer. She's already there. So I don't think so. That should be a setback, because granting security is at par with the male judges. They also need security over there in such areas. They're also doing the same kind of cases. So ladies would also need the same kind of security. So I think that part can always be taken care of. I don't think so. That keeps the women away from judiciary. In fact, judiciary that way would be a most protected. Once you are a judge, then it should be the most protected profession that way, where their security is concerned. Actually, so that is not what keeps them away.
It is actually the way, like I again say that it is the collegium or the selection committee who is actually to now wake up to this, that women will have to be given their equal, and that they should not be, nothing should block their view. They should be ready to accept women in this profession. You know, with this now coming that women should join NDA and all also, I think judiciary is more comfortable for a lady judge to join, like a medical profession and all that. They should accept this. And a woman judge, let me tell you, her way of looking at things, with more crimes against women, we may need more women judges also. Yes. बिल्कुल। मैं ये सवाल जरूर दो लोगों से पूछना चाहूँगी। सबसे पहले शोभा गुप्ता आपसे कि जब कोई विमेन जज बैठती है बेंच पे और आप लोग बहस करती हैं और एक पुरुष जज सुनता है, क्या कोई फ़र्क लगता है आपको अपने उस पूरे डेकोरम में, और डेकोरम से भी ज़्यादा जो एक दूसरे को ऐसा लगता है कि एक दूसरे को ज़्यादा समझ पा रहे हैं, जो वुमेन जज है वो ज़्यादा समझ रही है आपके मामले को? शोभा गुप्ता, ये सवाल आपसे है। मैं इतना ज़रूर समझ सकती हूँ कि आपको शायद ज़्यादा फर्क नहीं लगता हो, लेकिन एक वुमेन जज बैठती होगी तो कंफर्टेबल ज़रूर हो जाते होंगे आप लोग महिला को देखकर। लेकिन जस्टिस शिवराज पाटिल, डू वुमेन ऑन द बेंच मेक अ डिफरेंस? डू वुमेन जजेस जज डिफरेंटली देन मेन? A recent study of 6 lakh criminal cases found women judges impose sentences that were about 1.7 months shorter than men. Do you think, sir, that women judges make lots of difference? No. Let us look at the basic facts. Men and women both join law courses. They complete law examinations. They join the bar. They practice for a number of years. Then they become judges. Sir. The judicial training over the years they have in their mind. Whenever a case comes before the court or before a judge, they will go by the facts and law. They are guided by the precedents. They are guided by already settled principles. They apply and then decide a case. Whether a man or woman, a judge, whether it is a woman judge or man judge, ultimately they go by certain norms. There is one area where you can find that study shows, there is one area, namely, where in criminal cases particularly, when the question of sentencing comes, studies show that women have been stricter or harsher than men in terms of imposing punishment. Human nature as it is, there are tough women and gentle men. There are tough men and gentle women. There are no two fingerprints which agree. Man to man, human being to human being, their perceptions and also their, we call it empathy or sympathy or compassion, whatever factors are there, at the time of sentencing, to that extent, a personal view, whether a sentence should be more or less, there may be variance. But in all other matters, I don't think there is any difference between men judge or women judge in the matter of deciding cases. That's my view on the matter. Justice Sujata Manohar, you want to comment on this issue? No, I basically agree with what Justice Shivraj Patil has said. But it does make a difference in some cases in understanding facts. For example, in criminal cases especially, when a woman, for example, feels that she is under threat and she may be killed by her in-laws for dowry or something like that. You know, the sensitivity of a woman in this area may or may not be appreciated by the men judges. Most of them do appreciate, I'm not saying no. Occasionally you have a case where the men think that, well, she's just asking for sympathy by writing such letters to her family. So this is where in appreciating facts, perhaps in some cases it may make a difference whether it's the woman judge who is appreciating facts or a male judge. But as far as the law is concerned and its application, I agree with
Justice Shivraj Patil, there is no difference, and there should not be any difference. जी बिल्कुल। और इसके साथ ही हम अपने कार्यक्रम के इस अंतिम दौर पर पहुंच चुके हैं और इसमें कोई शक नहीं कि जैसा आप सबों ने कहा कि ये जो तस्वीर है वो तस्वीर बदलेगी ज़रूर, धीरे धीरे ही सही, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत अच्छी हुई है तो जाहिर सी बात है कि तस्वीर भी अच्छी बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और एक बड़ी कहावत ये है कि अगर किसी भी जगह की आप बिल्कुल तस्वीर बदल देना चाहते हो, यदि किसी भी परिवार के आप बिल्कुल हालात बदल देना चाहते हो, तो वहाँ के महिलाओं को आप एजुकेट कर दें, उसको शिक्षा दे दें। उस देश की, उस घर की, उस परिवार की पूरे हालात बदल जाते हैं। उसी तरह से यदि आप न्यायपालिका की तस्वीर बदलना चाहते हैं तो न्यायपालिका में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ले आएँ। इस देश में वैसे ही न्याय की जो पूर्ण व्यवस्था है वो हो जाएगी और हर किसी को न्याय मिलने की संभावनाएं पूरी तरह से बढ़ जाएंगी। पूरे विश्व में यदि देखा जाए तो अभी तक न्यायपालिका को में महिलाओं की जो तस्वीर है अभी आधी अधूरी ही है, लेकिन भारत ने अपना कदम बढ़ा लिया है और आने वाले दिनों में यहाँ की महिलाएं न्यायपालिका में वो जगह पाएंगी जिसको लेकर इस देश को गर्व होगा, यहाँ के लोगों को गर्व होगा। इसी उम्मीद में आज बस इतना ही। नमस्कार।